or the requirements made you switch? Actually, the requirements made me switch. They weren't having the more vacancies in Python developer, and even they asked me about this thing, and I told that I'm flexible. Like I can work on multiple platform. Then they trained me for the JavaScript. They didn't let the just handle the project, but they trained me for it. So that's not a problem. Like they give you time around 5 to 6 months for the training, and easily you can learn any of the language. So my one little concern is I'm learning currently React JS, and for example, the company your company Simform has arrived. Hmm. They have opted. Their requirements are Python developer. So I told Hmm. them I'm a React JS developer. I'm learning, and I have learned a lot of it. But Hmm. if I want, and I am flexible enough to change to Python, so how do I switch? They will give me time to learn Python, more about Python, or they'll just go on. Guys, let me be clear about this thing. Internship. What internship is about? Internship, they don't provide you live projects in the internship, to be honest. They train you for that thing. For suppose you are opting for React.js, then they will made you learn from scratch. Like they will let you learn HTML, CSS, JavaScript, then React.js. They won't let you just hop into JavaScript. So don't worry, they will give you time to switch, and even they will allow you to learn the things. So don't worry about it. Okay, okay, thank you. That's fine. Great. Thank you, Any Parth. more questions? Any other question? Students, any query? Okay, thank you, Rakshit. Next, Welcome. I request to Rajan. Rajan, please share your experience. Yes. Rajan So is also hello. in a same firm, am I right? Yes. Okay, So please, hello Rajan. everyone. Yeah. Hello everyone. Myself Rajan Lakhan and I am as a QA in Simfom. So yes, जो जो भी कौन कौन से राउंड अगर वो सब तो रक्षित ने जैसे कि आपको बताया है। बट मैं अगर आपको अगर क्यूए का बताऊँ तो टेक्निकल राउंड होगा ना, उसमें आपका पहले तो वो रिज्यूम तो मेन देखेंगे, ठीक है, कि आप उसमें कौन सी टेक स्किल्स लिख रहे हो, क्या क्या लिख रहे हो, कौन से प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है। और वो अगर उसका अगर मानो तो वो आपको प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछ सकता है कि लाइक ये प्रोजेक्ट किया तो आपने उसमें क्या क्या वर्क किया है, वो सब। और अगर आप क्यूए कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने पहले तो मे बी किसी ने इतना इतना बहुत तो में क्यूए नहीं किया होगा, तो वो भी पूछ सकते हैं आपको कि आपने इतना तो क्यूए किया नहीं है तो फिर आपको क्यूए क्यों लेना है ऐसा। आपने प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है तो वो तो सब लैंग्वेज पर ही बेस्ड है। तो इस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। और अगर मैं क्यूए की बात करूँ, अगर किसी का क्यूए में अगर कोई अप्लाई करना चाहता हो तो मतलब उसमें मैन्युअल ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है, क्यूए में टेस्टिंग करने का होता है। तो जैसे कि वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन और वो सब है, तो उसका जैसे ही डेवलपमेंट खत्म हो जाता है तो हम मार्केट में जो प्रोडक्ट रिलीज करते हैं उससे पहले क्यूए करना होता है, ठीक है। तो उसमें दो टाइप का टेस्टिंग आता है, मैन्युअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग, राइट। तो अब उसमें भी डिफरेंट टाइप के आते हैं, एपीआई टेस्टिंग आता है, डेटाबेस टेस्टिंग आता है, यूआई टेस्टिंग आता है, फंक्शनल टेस्टिंग आता है। तो इन सब के बेसिस पर वो लोग आपको क्वेश्चंस कर सकते हैं टेक्निकल इंटरव्यू में। और जो आपने वो रिज्यूमे में जो टेक स्किल्स लिखे होंगे ना, उस पर तो डेफिनेटली वो करेंगे, लाइक उप्स कॉन्सेप्ट वो सब आएगा, डेटाबेस का वो पूछ सकते हैं। फिर एसक्यूएल क्वेरीज आपको मे बी वो लिखने को दे कि एक दो एसक्यूएल क्वेरीज आपको लिखने को दे। तो या इस टाइप का सब कुछ होता है प्रोसेस। Okay, thank you, Rajan. Students, थैंक यू। any question regarding QA? Okay. Um, I would like to invite ओके। Trina. Trina Darji. हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। Yes. हाँ, मोस्ट ऑफ राजन और रक्षित ने कवर कर लिया है, बट मेरा एक्सपीरियंस इन्फॉर्म में काफ़ी अच्छा था। अभी लाइक मैं इंटरव्यू प्रोसेस की बात करूँ तो फर्स्ट एप्टीट्यूड राउंड होगा, जिसमें 30 क्वेश्चंस दिए थे हम लोगों को और 30 मिनट का ही टेस्ट था। तो उस क्वेश्चंस में पहले तो जब जिन लोगों
ने रजिस्टर किया है स्टैक वाइज, उनको ये एप्टीट्यूड होगा। और उसके बाद उसमें से वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उनका कोडिंग राउंड होगा। सेम डे पे हमारा कोडिंग राउंड था। कोडिंग राउंड में 4 क्वेश्चंस थे, 3 नॉर्मल क्वेश्चंस थे जो आई थिंक सब लोग क्लियर कर ही सकते हैं। पैलिंड्रोम होते हैं, फिर रिवर्स स्ट्रिंग कैसे करते हैं वैसे टाइप के थे। बेसिक ओप्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वैसा सब कुछ होता है। और एक एसक्यूएल का क्वेश्चन था जिसमें आपको क्वेरी लिखनी होती है। इस तरह का कोडिंग आउट है। अगर वो क्लियर करते हो फिर आपके लोग एक मेल आएगा एचआर से, जिसमें वो इंटरव्यू का मेल होगा। अभी आपने जिस टेक में अप्लाई किया है ना, उसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको उस टेक्नोलॉजी का सब कुछ पता हो, बट दे वांट कि आपने ये 4 साल में जितना भी पढ़ा है, जो जो सब्जेक्ट में, उसका बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे कि मेरे इंटरव्यू में मुझे उप्स कॉन्सेप्ट में सब कुछ पूछ लिया था, जैसे एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, उसके बेसिक क्या होता है, उसका रियल टाइम एग्जांपल क्या क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स भी मुझे पूछा था, पोर्ट्स क्या होते हैं, एसएमटीपी क्या होता है। फिर अब अगर आपने अपने गिटहब प्रोफाइल डाली है रेज्यूम में, तो गिटहब प्रोफाइल में जो जो प्रोजेक्ट्स आपने लिखे हुए उसके बारे में पूछेंगे कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया तो इसके अंदर आपका रोल क्या था, आपने क्या काम किया, उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। और इसके अलावा उन लोग ये आपको, इसमें एचआर राउंड नहीं होगा सिम्फॉर्म में, एचआर और टेक्निकल दोनों एक ही होगा। सो साइड बाय साइड वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आप प्लेसमेंट में बैठे हैं, मास्टर्स करना है या नहीं करना है। वो जो भी हो, आप जेन्युइनली आप तब हमको बता सकते हो। और पूरा मतलब एक ही में खत्म हो जाएगा, इससे उसके बाद कोई राउंड नहीं होगा। एंड थोड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर देना, बाकी सब कुछ कॉन्फिडेंस पे ही है। जितना पता हो उतना बोलना, कुछ ऐसे ब्लफ मत करना वहां, वरना उन लोगों को पता चल ही जाता है। Yeah, that's it. Krina, can you tell us what's your designation in your company? Yeah. So I am a .NET developer in Simform Solutions. Okay. Student, any question? If you're really interested into the .NET, Yes, one question was there. Did they ask questions from your resume? Yeah, sure. They will ask questions from resume. रेज्यूमे में जो जो लिखा है, इनफैक्ट अगर आपने ये भी मेंशन किया है कि आपने ये वाला कोर्स किया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा मुझे पता है। मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो मेरे रेज्यूमे से उन्होंने सब कुछ पूछा था मुझे कि कौन सी टेक, अगर मैंने डॉटनेट में अप्लाई किया था ना, तो मेरे डॉटनेट का एक प्रोजेक्ट भी था। तो उस डॉटनेट के प्रोजेक्ट में मैंने डेटाबेस को फ्रंट एंड से कैसे कनेक्ट किया था, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन उन्होंने मुझसे मांगा था। सो जो भी आप लिखो उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया तो होना ही चाहिए, ताकि आप उनको एक्सप्लेन कर सको। Okay, thank you. हाँ, वेलकम। okay, any other question? Students, any other questions? Any query? Dhairya, Bhavya, Vedant, Bhavanshi, any question? ऐसे आपके सीनियर बहुत बिजी हैं, वो आपके लिए यहाँ पर आए हैं, तो पूछ लो उनसे, अच्छे एडवाइस देंगे। ओके, थैंक यू क्रीना। थैंक यू। Okay, the next I would like to invite from Simform, Parth, Partharji. दिव्यांग, ये धरती, They are not in yet, ma'am. I don't know that are join. I know that, but some network issue maybe. Okay. Okay, so start with the Meditative Niyati.
Yes, ma'am. Okay, so okay, Niyati, so start with you. This is a program analyst trainee into the Meditech. Okay, so please, Niyati, continue. Okay. Good afternoon, friends. So Meditech में पूरी प्रोसेस थोड़ी अलग है प्लेसमेंट रिलेटेड. दे हैव एप्टीट्यूड टेस्ट बट वो बाकी कंपनी के जैसा एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता है. वो थोड़ा डिफरेंट है. वो उसमें हमें पता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट में थोड़े टेक्निकल लाइक मैथ के रिलेटेड तो क्वेश्चंस होते ही है. बट मेडिटेक के एप्टीट्यूड में थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस है. वो आपकी साइकोलॉजी को चेक करने के लिए थोड़े डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस पूछते हैं. एंड वो बहुत बेसिक होगा, इजी होगा. बट हाँ, उन्होंने थोड़ी एप्टीट्यूड टेस्ट की पैटर्न चेंज की है अभी अभी. तो 10 मिनट्स में कुछ 50 क्वेश्चन जितना कंप्लीट करना होता है. और आप जितने भी क्वेश्चंस कंप्लीट करते हो उतना बेनिफिट में रहोगे. सो एक क्वेश्चन पे टिके नहीं रहना है. अगर नहीं आता है तो जस्ट गो विद द नेक्स्ट. एंड नेक्स्ट राउंड होता है डायरेक्टली इंटरव्यू होता है. उसमें टेक्निकल और एचआर राउंड दोनों कंबाइन होते हैं. तो आप अगर आपने एप्टीट्यूड क्लियर कर लिया तो आप एक बार एचआर से कॉल रिसीव करोगे. और एचआर आपको पूछेंगे कि आप किस प्रोफाइल के लिए जाना चाहेंगे. उसमें डिफरेंट प्रोफाइल्स जो भी अवेलेबल होंगे, तो उसमें अलग अलग प्रोफाइल से कोई ऑप्शन आपको देंगे. उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपको किस टेक्नोलॉजी स्टैक में जाना है. अगर आपको मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है तो उसमें पूछेंगे कि आपको iOS में जाना है कि फ्लटर में जाना है. और ऑटोमेशन भी होता है. उसमें ऑटोमेशन का भी अलग प्रोफाइल है. काफी अलग डिफरेंट प्रोफाइल्स है. तो एचआर पहले आपको पूछ लेंगे कि कौन से प्रोफाइल के लिए आपको इंटरव्यू देना है. तो आपको सिलेक्ट करना है. फिर आएगा आपका इंटरव्यू राउंड, जिसमें वो बेसिकली पूरा आपका रेज्यूमे ही चेक करेंगे कि अगर जो जो चीजें आपने रेज्यूमे में ऐड की हुई है वो आपको 100% पता होनी ही चाहिए. उसमें से ऐसी कोई चीज रेज्यूमे में ऐड मत करो कि जो आपको नहीं पता है और आप सिर्फ अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए ऐड कर रहे हो. ऐसा मत करो. जो आपको आता है वही उसमें ऐड करो. उसमें से आपको सभी क्वेश्चंस पूछेंगे. फर्स्टली वो इंटरव्यू में आपके प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे कि कौन से प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया हुआ है. और उसमें से थोड़ी डिटेल्स में थोड़ी पूछेंगे कि आपने कैसे वर्क किया है. ये प्रोजेक्ट कैसे आपने कंप्लीट किया. आपने अकेले किया है, ग्रुप में किया, आपका रोल क्या है, वो के लिए दिया हुआ था इंटरव्यू. उन्होंने Niyati, sorry to interrupt you. Sorry to interrupt you, but your voice is not audible. You are not a am I proper audible? audible. Hello. Am I audible now? Yes. Please continue. ओके, सॉरी. सो इंटरव्यू राउंड में वो पहले प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे कि प्रोजेक्ट्स में आपने क्या 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 काम किया हुआ है. वो सब डिटेल में पूछेंगे. एंड मैंने मोबाइल ऐप डेवलपर का इंटरव्यू दिया हुआ था. तो उन्होंने मोबाइल ऐप्स मैंने जो भी बनाई थी उसके काफी डिटेल में सब कुछ पूछा हुआ था कि ये ऐप आप स्केलेबल कैसे बनाओगे, कि इतने सारे यूजर एक साथ में यूज कर रहे हैं तो आप वो सब डेटा हैंडलिंग और वो सब कैसे करोगे. तो सब ये सब टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं. और एचआर राउंड भी लास्ट में ही 15 मिनट्स में वो कवर कर लेते हैं. एचआर रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं. बस तो इतना ही है इसमें. और फिर बाद में अगर आपने क्लियर कर लिया होगा तो आपको कॉल आ जाएगा और जो भी पैकेज और वो सब है वो डिस्कस करने के लिए. Okay. Thank you, Niyati. Students, किसी any को कोई question? Any query regarding Meditech? और हाँ, एक चीज कहनी थी कि टेक्निकल राउंड में बेसिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना. कि बहुत काफी टाइम स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि बहुत हाई प्रोग्रामिंग वो सब करते हैं. बट ऐसा नहीं होता. इंटरव्यू में वो बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं कि पैलिंड्रोम ये कैसे करना है. और वो लोग ऐसा बोलेंगे कि ये अप्रोच से करो, ये अप्रोच से मत करो.
तो वो जो अप्रोच से बोलेंगे उस अप्रोच से करना होता है, मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग ही होती है, और उसमें ये उप्स कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बस, और तो कुछ नहीं। Okay. Students, any question? Ruchit, Harshit, any question? Vaishnavi? Okay. Thank you, Niyati. Next, I would like Tirth from Meditech. गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो Good मेडिटैप की जैसे बताया नियति ने कि इंटरव्यू प्रोसेस में सबसे पहले आपको एप्टीट्यूड होगा, उसके बाद एचआर आपको ऑप्शंस देंगे कि आप इन पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको उसमें से कोई भी एक पोजीशन चूज करनी होगी। तो उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा जो कोई भी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेंगे। उसमें आपको अपने रेज्यूमे में सब कुछ जितना भी लिखा है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ लिखने के लिए मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग लिख दिया, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स आपने कैसे किए उसका आइडिया नहीं है आपको। बिकॉज कहीं ना कहीं वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने भी किया होगा उनके कॉलेज में, तो उनको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि कैसे मशीन लर्निंग वर्क करता है। तो ये आपके पोजीशन के लिए रेलेवेंट ना हो, फिर भी वो उसमें से क्वेश्चंस आपको पूछ लेंगे। तो उसी के साथ आपका मैनेजर राउंड भी हो जाएगा, एंड इसमें वो आपको बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस पूछेंगे एक दो कि and then they ask basic questions about language that you choose. तो मैंने जावा चूज की थी, तो उन्होंने मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे थे जावा के, लाइक फाइनल कीवर्ड्स, स्टैटिक कीवर्ड्स एंड लाइक पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑल। एंड उसके बाद आपको एचआर का कॉल आ जाएगा कि आपको क्यों ये चूज करना है, ये पोजीशन आपको मास्टर्स के लिए नहीं जाना है, कोई प्लान है फ्यूचर में ऐसा, एंड दे डिस्कस द पैकेज विथ यू। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Okay. Thank you. हेलो। Yes. हाँ, ये मेडिटेप में साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड पोस्ट पे होती है, ओपनिंग होती है, तो उसके लिए क्या क्वेश्चन और क्या इंटरव्यू में होता है? Vishwas, can you repeat your question? मेरा क्वेश्चन ये है कि साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड मेडिटेप में भी ओपनिंग होती है, तो फिर उसके रिलेटेड क्या इंटरव्यू में प्रोसेस होता है, क्या क्वेश्चन आते हैं, ये उसके लिए सिक्योरिटी के रिलेटेड इतना तो मुझे नहीं पता, बट दे विल basically go with your resume, whatever you have added in your resume, they will ask from that only. बार दे दो। यस, सो हमें इतना तो आइडिया नहीं है, बट वो आपसे आपने कौन से कोर्सेज किए हैं तो उसके रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन पूछेंगे, बिकॉज आपको उसके बाद ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ पे, तो इसका तो कुछ ऐसा इश्यू नहीं होगा, बट यू शुड बी क्लियर अबाउट योर बेसिक्स। मैंने सबसे दिखाया आप। ओके, थैंक यू। Yes, Meet. Do you have any question? Meet. Okay, so next I would like to invite Krupali.
Wait for 5 minutes, please. Okay, so thank you, Niyati and Tirth. So, any question for a Meditech student? Okay, so next I would like to invite Om from Solution Analyst Private Limited as a DevOps intern. Okay, Om, please continue. So, good afternoon, everyone. My name is Om Dilmar, and I am a DevOps engineer at Solution Analyst Private Limited. So, basically, in Solution Analyst, we had uh, 3 rounds for placement. The first round was the aptitude round, second was the technical round, and the third was HR round. So in aptitude round, as we all know that it contains the questions like simple mathematics question, logical reasoning, some grammatical questions. And in solution analysis, they also had few coding questions in their aptitude test. So after giving aptitude test, and if you clear that test, uh, you will get a mail to appear for the technical round, where they will ask you questions regarding your technical stack, and they will most probably ask you the questions from your resume. So uh, make your resume as simple as possible and keep everything clear in your resume. And don't overcomplicate it, because it will not work if you will not able to answer the questions asked from your resume, because they believe that uh, uh, anything which you have mentioned in your resume, you are mastering that. So make your resume according to that. And once you clear the technical round, they have called us for the to visit the company premises for the HR round. So HR round was quite simple. Anyone who was good in communication had cracked the HR round. So HR round was quite simple. And in technical round also, be prepared with the coding part, because they can ask you for live coding in the technical interview. So be prepared with that, and it will not be much difficult. It will be easy. Like you need to guess the pattern, you need to decode anything. Like they have given you the code and you need to guess the output, like what will be the output of this code. So yeah, coding part will be easy. You don't need to worry about that. And what they will expect you is you should be flexible to work with any technology. So I had given the interview, my technical interview, in Python programming, because I was very much confident about that. And all all the thing I have mentioned in my resume was according to my technical stack. And at that time, I was learning AWS, and I was not much like known to the cloud part. But when I appeared for the HR round in the company, they told me that we don't have vacancy for the backend programming, and we do have vacancy in DevOps and embedded technology. So at that time,
I was quick enough and I made the decision to go for DevOps because I was learning AWS. So you don't need to worry about anything if you don't know about the technology stack. In interview part, if you don't know about any technology, you can simply answer anything which you know about that stack, or you can simply say no that I don't know about this technology. Don't bluff anything. And so some people were worrying about if they tell me to switch the technology, what will I do? So you don't need to worry about that. The company are giving you the internship period. You're gonna learn everything in this internship period. So in every stack they have well planned structure so that you can learn that stack properly. So before entering into DevOps, I was just at the introduction part of the AWS. So I was not in very much into DevOps at that time. But as my internship started, I keep learning, and within 6 months, currently, I am very much able to do the DevOps part for the project. I do make pipeline with GitLab, GitHub, and Jenkins, and everything this developers do. I don't know much about the coding part because DevOps is not about coding, but you need to know about the Linux part, the shell scripting part, the networking part. So basically, any infrastructure on which your website is hosted or web application is hosted will be done by us. So the deploying part will be handled by the DevOps, and DevOps will be the link between the developer and the operations. So it's basically the full form of DevOps, that is developer and operations. So we will be the link between them, and whatever developer will commit to the repository will get deployed on the server. So yeah, we made that pipeline. So you don't need to worry about anything. The company had a well-defined plan for you to make you an intermediate or master in that technology stack. You just grab the opportunity and get into the industry. Then after that, the company had a very good plan for you. So you don't need to worry. Just be flexible, answer the questions correctly and confident, and rest it will work for you. Thank you so much. Yes, thank you. Students, any question regarding the DevOps intern? And especially for the solution analysis. Yes, ma'am. And Yes? hello. Yes, yes. मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मैं अभी डेवऑप्स में समर इंटर्नशिप कर रहा हूँ और मुझे पहले से डेवऑप्स का नॉलेज है, तो मेरा टेक्निकल राउंड डेवऑप्स के ऊपर होगा या कोई बेसिकली लैंग्वेज जैसे तुम्हारा हुआ था कि पाइथन के ऊपर हुआ था, लेकिन मुझे पहले से डेवऑप्स में नॉलेज है और मैं अभी डॉकर और क्यूबरनेट पे वर्क कर रहा हूँ अभी, तो मेरा टेक्निकल राउंड कैसा होगा? तो अभी आप डॉकर और क्यूबरनेटिस पे वर्क कर रहे हो, राइट? सो ये चीज आप अपने रेज्यूमे में मेंशन करोगे। देखो, कंपनी वालों को पहले से आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। आप जितनी भी चीजें अपने रेज्यूमे में मेंशन करोगे और उनको सामने से बताओगे, तब उनको पता चलेगा कि हाँ, इस बंदे को ये भी आता है। तो कंपनी वाले कभी गेस करके आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि हाँ, इसको ये आता होगा, मैं पूछ लेता हूँ। आप जितना बताओगे उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे कि आपने अपने रेज्यूमे में मेंशन किया है कि हाँ, मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप की है एज ए डेवऑप्स इंटर्न और यहाँ पे मैंने ये टेक्नोलॉजी स्टैक सीखा है, तो फिर आपको उस टेक्नोलॉजी स्टैक के हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। या you're welcome. Any other question? Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Yes, Rakshit. I would like to add something to this. Yeah, sure. You guys would be wondering why every senior is focusing more on a resume. Like, resume is your first impression to the company, to the person who is interviewing you.
make sure you don't boast in your resume and you write the things that you know or the things that you have worked on. So they will analyze you on that thing, and they will ask you question regarding that. So please make sure whatever you write in your resume, you should have knowledge of it, whether it be project, internship, or any of the skills or achievements you make it. Thank you. Yes, Om. Yes, and guys, don't overcomplicate things. The company will go for the basics. They don't expect so high from you. They will only ask the basic questions like object-oriented concepts, the data structure part, algorithm part, the DBMS part, the networking part. Yeah. So these are the basic core subjects of our IT industry. So yeah, the company will be focusing on these major parts. So you don't go for any high technologies like ML or AI. It's good if you know, but more the company will be more focusing on these core parts like object oriented, DSA, DBMS, etc. So to learn that in deep and from basic, like I need to mention one question I have faced in interview that an interviewer has asked me to tell me about the default constructor in Java. So I told him about the default constructor, like it runs if we don't mention the constructor in our coding part. But the interviewer had asked me to like how that default constructor will look. If you don't mention it in the code, then also the object will call the default constructor, which is in JDK. Then how it does look. So yeah, that kind of basic question would be there in interview. So these basic questions will be their company will be focusing on. So you need to learn the basic part, the fundamental part. Okay. Any questions, students? Okay. Thank you, Om. Thank you, Rakshit. I would like to invite Shraddha from TattvaSoft. Yes, ma'am. So my name is Shraddha Mehta. I am currently working in TattvaSoft as SharePoint developer. पर मेरी ट्रेनिंग जो हुई थी वो .NET में हुई थी बट आफ्टर दैट दे हैव वैकेंसी इन SharePoint, so they have shifted me in SharePoint. So in TattvaSoft जो पहला राउंड था वो ऑनलाइन टेस्ट, वो 1 कलाक और 45 मिनट्स का था, तो उसमें MCQs भी होंगे और कोडिंग राउंड दोनों साथ में ही थे। फिर सेकेंड राउंड जो इंटरव्यू राउंड था वो 30 मिनट से 45 मिनट तक का था और उसमें मोस्टली क्वेश्चंस रिज्यूम में से पूछे गए थे और बाकी ओपीसी कंसेप्ट और जो भी ऑनलाइन टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस थे वो पूछे गए थे, क्योंकि हमारा ऑनलाइन टेस्ट हुआ था तो अगर किसी ने कॉपी किया हो या वैसा हो तो उसमें से भी हमको लाइव क्वेश्चन, तब एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे गए थे। और मोस्टली TattvaSoft में पैटर्न रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे थे। जो भी कोडिंग का पूछा था वो एरे का या स्ट्रिंग का वैसा कुछ नहीं पूछा था, एक पैटर्न उन्होंने दिया था वो हमको कोड करना था, वैसा पूछा गया था। उसके बाद थर्ड राउंड HR राउंड होता था, पर HR राउंड वाज वेरी इजी। उसमें सब कुछ लाइक हॉबी, फिर कितने मार्क्स आए थे 12th में, कॉलेज में, वैसा पूछा गया था। एंड व्हाई यू वांट टू चूज TattvaSoft, वैसा क्वेश्चंस पूछे गए थे। पर TattvaSoft में हमको चॉइस नहीं दी गई थी, लाइक हमको .NET के लिए अप्लाई करना है, PHP डिजाइनिंग या SharePoint, वो लोग ही डिसाइड करेंगे। लाइक आपका HR इंटरव्यू हो गया, उसके बाद उन्होंने बताया था कि आपको ये डेजिग्नेशन दिया गया है, मतलब आप लोग चेंज नहीं कर सकते। किसी को मोबाइल एप्लीकेशन दिया था, किसी को .NET, फिर आप चेंज नहीं कर सकते। बाद में उन लोगों को वैकेंसी थी SharePoint में, इसलिए मेरा .NET से SharePoint का ट्रांसफर हुआ था। और मोस्टली जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे ही OPC, DBMS और DS के बेसिक्स थे। Okay. Students, any question regarding the TattvaSoft especially? Okay, thank you, Shraddha.
Thank you, ma'am. Okay, next I would like to invite Rishi Shah from vacancy. Yes, ma'am. Hello, everyone. So currently, I'm working as a React Native developer at Vacancy, and to take the development process of the projects under the React Native category. So we develop cross-platform apps, and if the placement, like I would like to see the process, I would like to explain the process of the placement. Then it consists of 3 rounds. The first round is online assessment. The online assessment round is breaked into 3 parts again. First is the aptitude test, second is the technical test, and third one is the coding test. In the aptitude test, they ask basic questions as mentioned earlier by my colleagues, I mean, batchmates. And in the technical test, they ask about they allow you, they offer you 10 or 15 MCQs where you need to attempt it in given time. Uh, they are basically related to system design, operating systems, and somewhat related to networking part. The third part, which consists of online coding round, which consists of for me it was of 2 rounds, where one DSA question was asked, and the second was a scenario given to solve a SQL. I mean, to write an SQL query for the scenario. So coding round is pretty much easy. They allow you, I mean, they offer you the 45 minutes of time to complete it, but it can easily be completed in 30 minutes or 15 to 30 minutes of time period. The coming back to the rounds, the second round was technical round where two of the senior developers will be countering you with their questions. The one will be focusing on the DSA part, and the another one again with the SQL part in the technical round itself. So they firstly ask you about your preferred language. Mostly they offer only C, C++, and Java. They don't take interviews in Python, as Python they don't work that much upon. They work on the frameworks part, but for the technical round, they do not offer Python language for some reason. And the question, if you are solving with the one language, and there may be a case where the developer might ask you to write down the same code with any other language. For me, that was the case. While I solved the question in C++, they had asked me to again solve it in the Java language. And third round is the HR round, where most basic questions will be asked, like why do you want to join the company and stuff. Later on, it will be increased to your resume part and then the salary negotiable part. And I would like to add one thing for the HR round. Communication skills is must, because they judge purely based upon your communication skills. They do not allow any other language rather than English to appear in that round. That's a limitation. Yeah, that's all from my side, ma'am. Okay, thank you. Students, any question regarding vacancy? Okay. Students, any question regarding any company of Simform, Meditech, vacancy, solution analysis, and TattvaSoft? Hello. Yes. So, what questions did you face regarding React part? Not in the placement part, but like they only offer a position for flexible candidates who wants to work or who are willing to work in any of the technologies. So my interview was not based on React or JS or any of the technologies.
the framework. It was purely based on data structures. Upon recruiting, like if you get confirmed at the vacancy, then they have multiple rounds of assessment where they will assign tasks to better understand what technologies you are preferring or you are good at. And upon the assessment or the evaluation, they will offer you the position for any of the technical stack. So we are clear to select any position. They offer us, okay, like these are the position. For which position do you want to pick? Like that. At the initial, they will have an assessment test in the internal itself, in the internal organization and the company itself, where you will be given task with designing part for HTML, CSS, and JS, and then you will be given some task regarding backend part. So, and with the initial training of 1 month, and upon the evaluation after 1 month, they will offer you some of the positions that these are the positions we think you are good at, and you need to choose one. And if you are purely good at only one thing, then they will directly offer only one option. Like they will not offer an option to you, they will just place you in the technology itself. Okay, and one question was there, like DSA is a best. There are a lot of question can be asked in DSA. So what what are the most common and important question that you have seen and heard that they can ask? Well, my knowledge and by with talking with the technical recruiters from my company, it depends upon the recruiter who's taking, because they don't follow any sort of general scenario where these questions are must. But yeah, it depends upon the recruiter you're interviewing with. Most basic will be starting with the most common data structures, arrays, sorting, searching stuff. And if there you told that your interview based on was DSA. So what question you did? What was the questions there you couldn't answer? That hard questions like. They don't go for hard mm, when they come to the I mean a campus. They know that what sort of level they need to ask the questions for. So they most of the companies have a cap of medium level questions, where it comes to the data structures, where it caps upon the searching sortings with they give you a scenario where how could you apply a data structure to this scenario, and you just need to answer with a possible solution. They do even help if you are getting stuck at point. You need to share your screen obviously to let them know your approach. If you're getting stuck at one point, then they may help you out that can you do this, can you do this. They will just ask you if that approach is good or not. After all, it depends upon you which approach to follow. Thank you. Thank you, Rishi. Okay, any other query? Any question? Okay. So, Rakshit, Rajan, Reena, Rishi, Niyati, Teep, Om, and Shraddha. Thank you. Thank you so much for sharing your experience, your knowledge, and your valuable time with us. Thank you. Welcome, and we all wish you very all the best. Prepare well, and don't take much load on yourself. Yes, guys, all the very best. All the very best to everyone and be confident while interview.